Good morning, students. Welcome you all to Standard 5. Today we are going to study the first chapter of computer. The first topic is data storage medium. Data means information. Storage, the place where we can store the different information, different data, and media through the medium. What is the different media? What is the different medium through which we can store the data in any device? किसी भी डिवाइस में हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में कैसे सेव करेंगे, वी आर गोइंग टू रीड टुडे. So the first topic is storage on computer. Computer use electricity to store and process data. डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है. whether it is a laptop or it is a desktop or it is a tab, सबको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. फर्स्टली वी डू चार्ज इट, या कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसमें, एंड देन वी प्रोसेस द डेटा. जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं, whatever we are going to input into it, then it processes out, और फिर उसके बाद वो आउटपुट की तरह रिजल्ट दे देता है. Memory is the part of computer that holds data and instructions for processing. मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को होल्ड करता है और जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, whether we are giving that 10 divided by 2 या 2 को 7 से सब्सट्रैक्ट करना है, whatever instruction we are giving to the computer, उसको वो प्रोसेस करता है. We can give these instructions through the input devices. Input devices आपने पहले भी पढ़ा है. Keyboard, mouses, they all are input devices. Where output devices are speakers, printers, they all are output devices. Now we are coming to the unit of computer. Students, we have in mathematics और फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग बहुत सारे यूनिट्स का बात करते हैं. वी हैव सीन लॉट्स ऑफ यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, many units are there. Similarly, in computer also a unit is there, and that unit is called a bit. A bit is the smallest unit of computer. Now these bits are grouped together in the collection of 8. 8 bits को हम लोग एक साथ ग्रुप करते हैं. जब एक साथ 8 bits are collected together, this collection is called byte. It means 8 bits is equal to 1 byte. This is the relation between bit and byte. Now we are going to study types of computer memory. There are two types of computer memory: primary memory and secondary memory. Primary memory or internal memory is an inbuilt memory. Inbuilt, it means these memory are in the computer devices from the beginning only. इसको हम लोग अलग से insert नहीं करते. Primary जो सबसे पहले आया. As firstly you go through the classes of primary sections, play, nursery, prep, 1, 2. सारे पे जाते हैं. Then you come to secondary sections 8, 9, 10 and all. Similarly, primary memory होती है कंप्यूटर की. This is the internal memory. इसको primary बोले या फिर internal बोले, which is an inbuilt memory. Now the examples of these two primary memories are RAM and ROM. We will discuss about RAM and ROM in next topic. Now secondary memory. Secondary memory are used to store large data, and these data can be stored permanently. Primary memory में हम permanent किसी भी चीज को store करके नहीं रख सकते. Whereas in secondary memory जो data हम store करते हैं वो बहुत large data को हम store करके रख सकते हैं, large information को store करके रख सकते हैं और उसको permanently store करके रख सकते हैं.
अब CPU cannot access this secondary memory. We will discuss later on कैसे वो access करता है. Now the storage devices are, it means secondary memory are pen drive, Blu-ray disk, floppy disk, DVD drive, many others are there. Now coming to what is RAM and ROM. You already know the full form of RAM is random access memory and the full form of ROM is read-only memory. RAM is a temporary storage, ROM is a permanent storage. RAM stores the data in MBs, whereas ROM stores the data in GBs. RAM is volatile and ROM is not volatile. RAM is used in normal operations, whereas ROM is used for startup of process of computer. The data is faster while writing in RAM, whereas while we are writing the data in ROM, it is slower. Why it is slower? Because only we can read the data in ROM. हम लोग सिर्फ data को read कर सकते हैं ROM में, लिख नहीं सकते हैं उसमें. Then there are different types of ROMs जो हम लोग next topic में discuss करेंगे. Till now, what we have read is about RAM and ROM. कि RAM टेम्पोररी है, उसमें कुछ भी हम परमानेंटली नहीं स्टोर कर सकते. जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है डेटा ट्रांसफर हो जाता है रैम में और फिर वहां से हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं जो भी स्टोर डेटा है, और जैसे ही सिस्टम ऑफ करते हैं वापस से वो रैम से वो डेटा चला जाता है. whereas ROM is having permanent storage. अब RAM के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होता है, इसलिए उसके डेटा MB में ही स्टोर होते हैं. whereas ROM में वो कुछ एक्सेस कर सकते हैं, बस कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए इसमें GBs में स्टोर कर सकते हैं. Now we are coming to what assignments you are going to do. So your homework is what is computer memory, what is bit, and what is the relation between bit and byte, how it is related. What is the difference between RAM and ROM? Write the name of secondary storage devices. Thank you students. Have a nice day.